Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'll surrender it. Hold tight, hold tight. तो हेलो 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 चैप्स, कैसे हो आप सब। मैं वापस आ चुका हूँ एक और न्यू लाइव स्ट्रीम के साथ। आज हम लोग वापस खेल रहे हैं गंशिन इम्पैक्ट। और हैप्पी न्यू ईयर सबको, जो जो देखने आता है, जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, हैप्पी न्यू ईयर सबको। और होपफुली सबका दिन अच्छा जाए और सबकी विशेष पूरी हो। हालांकि मेरे लिए कोई न्यू ईयर अच्छा खासा नहीं गया, मतलब स्टार्टिंग दिन ही में ख़राब हो गया था। अभी भी कोई मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आ गया हूँ मैं। आह, आ गया हूँ मैं। सबको हैप्पी न्यू ईयर एक बार बोलने। तो लेट्स गो, देखते हैं आज गेम में क्या होगा। आज कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही आज थोड़ा एक्सप्लोरिंग करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी देखते हैं। बाकी लाइट चली जाती तो सॉरी गाइज, लाइट भी जा रही है 2-3 दिन से काफ़ी। तो अगर लाइट चली जाती तो सॉरी, फिर क्या ही बोलूँ। बाद में करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर बॉय। हेलो, कैसे हो ब्रो? हैप्पी न्यू ईयर टू यू ब्रो। थोड़ा लेट हूँ मैं, नहीं तो मैं 1 तारीख को ही करता, लेकिन लेट हूँ थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, आ गया हूँ। ओके, देखते हैं कि आज क्या कर सकते हैं हम लोग। बाकी आवाज़ आ रही है ना? आवाज़, यस, आवाज़ आ रही है। और क्या चल रहा है? सही ब्रो, सही। नयन कैसे हो ब्रो? हैप्पी न्यू ईयर ब्रो। मतलब सेम टू यू ब्रो। ओके, तो ये इवेंट आ चुका है, जो कि था मैंने, लेकिन प्राइजेस ले लिए थे। काफ़ी मेरे पास हैं अभी इस टाइम। मैं विश कर सकता हूँ स्टार्टिंग। चलो विश से करते हैं, कुछ विश कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है कैरेक्टर की। नहीं, एक सेकेंड। हाँ, ये आ चुका है ना, मैं ये लूँगा। 5 ले लेते हैं इसको, और 5 ले लेते हैं इसको। हाँ, 3, 5 दे। ओके, 3 दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 दिया तो मेरे पास 5 ये है और 3 ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको विश करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, पहले इसका भी बना लूँ मैं।
प्रीमो जेम्स का बना लूँ कुछ 800। चलो 10 हो गए कुछ। ठीक है 10 हो गए तो मज़ा आएगा। एक करेक्टर तो निकलेगा ही निकलेगा 10 में। ओके देखते हैं। प्लीज़ भगवान मिल जाए यार ये वाला। लेट्स गो। ओके पहला फेल। ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब न्यू ईयर इतना बेकार भी नहीं गया। कुछ तो अच्छा मिला। चलो अच्छी बात है। ओके 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 बारबरा मिल गई। अभी विश मत करो 2 दिन बाद करना भाई। मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि वो करेक्टर आ जाएगा 2 दिन बाद। मैं ये करेक्टर चाह रहा था इसीलिए मैंने विश किया। ठीक है सही तुम्हारी बात भी है लेकिन क्या करें मैं कर लिया हूँ। चल करेक्टर तो मिल गया ना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे करेक्टर मिल गया ठीक है। मुझे गिल्ट मतलब वो नहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है नहीं मिला कुछ नहीं है वो। समझ रहे हो ना। ओके भाई किस्मत देख रहे हो तुरंत मिला है तुरंत। What? 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 Oh shit man. Oh shit. Oh shit. क्या बात कर रहे हो भाई। क्या मेहरबान है भाई आज गंशन इम्पैक्ट वाले। क्या मेहरबान है आज। What the hell भाई ये क्या हो गया आज। आज कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो गया। What the hell। क्या हो रहा है भाई। 3 कैरेक्टर मिले मुझे आज 3 कैरेक्टर। यार यार कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो गया आज। कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें हो गई भाई मेरे साथ आज। I want. What the What the hell भाई। भाई पागल हो रहा हूँ। मैं हिल रहा हूँ पूरा हिल रहा हूँ। नए कैरेक्टर मिल गए यार वो भी 2। ऐसे वैसे कैरेक्टर भी नहीं है ओपी कैरेक्टर है ये। मैं कांप रहा हूँ यार। और कुछ मांग लिया तो भगवान से वो भी मिल जाता यार। चलो कोई नहीं। Even if we should look for a new and nothing. Gale, comb, Leoli Pavil. Morning. Report your affairs in order of priority. Be उसकी it आवाज़ भी in अच्छी है the काफ़ी gam अच्छी है। can care for us. I've come across. उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। It's don't. You are less good. Akina, we can. Wealth. Why settle for the victor? Blood repays blood. Let's. ओके तो इसको पहले आर्टिफैक्ट देते कुछ। ये क्योंकि मेरा मेन वाला होने वाला है अब। क्योंकि मैं इसको रखने वाला हूँ अच्छा खासा। अभी जो आर्टिफैक्ट मेरे पास है उसको दे देते हैं। कुछ खास नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी दे देते हैं। ये भी ले लो यार। क्या ही दिन हो गया भाई। इसको बुक देंगे एक अच्छी सी 4 वाली। 4 वाली 5 वाली अभी 3 ही वाली है मेरे पास। तो मैं अभी ये सब नहीं देने वाला इसको। मैं दूंगा जब इसको अच्छा खासा होगा। इसको देंगे बाकी इसका वेपन है मेरे पास।
ओ भाई ये क्या है इसके पास? इसका वेपन है मेरे पास, रुक जाओ मैं देखता हूँ। नहीं है, सॉरी। पर ये भी काफ़ी ओपी करेक्टर है, इसको भी दे सकते कुछ। कुछ हेल्प चाहिए क्या ब्रो? बताओ, ऐसे ही बताओ क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, मतलब कैरेक्टर कौन सा रखूँ, कैसे रखूँ। बाकी अगर आ सकते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फ्री हो तो। आज इसी इसी बहाने हैप्पी न्यू ईयर हो गया मेरा। ईटो में करो, निंग से अच्छे होते हैं। ईटो को डेफ वाला देना, ईटो को डेफ वाला देना। ईटो कौन है? ओके ये इसको डिफेंस वाला देना है, ठीक है रुक जाओ मैं देखता हूँ डिफेंस वाला। डिफेंस डैमेज, डैमेज ईटो मेन करे, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डैमेज, जियो डैमेज बोनस है इसमें, और पायरो डिफेंस है ये, डिफेंस वाला देते हैं, चलो एक दो डिफेंस दे देते हैं। बाकी अटैक भी करेंगे यार, इससे अच्छा खासा करेक्टर है, अटैक भी रखना चाहिए ना। डिफेंस वाला ना, एचपी दे दिया इधर, और ये अटैक है, अटैक 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 डिफेंस, डिफेंस कितना डिफेंस हुआ यहाँ पे? 38, अटैक 41, मैक्स एचपी 678। ठीक है ठीक है ठीक है। Arataki numero uno Ito here in the flesh. ओके काफ़ी अच्छी। वाइट वाइट ब्लाइंड वेपन क्राफ्ट करो ईटो के लिए। ओके कहाँ से करना है मुझे बताओ थोड़ा, यहीं से होगा? रुको ज़रा देखते हैं। कैन आई हेल्प यू? नहीं मुझे क्राफ्ट करना है। ओके वाइट कौन सा वेपन? वाइट ब्लाइंड ये वाला। ओके इसके लिए मुझे चाहिए ये क्रिस्टल चंक्स। क्रिस्टल चंक्स मुझे वहाँ वहाँ मिलेंगे, मुझे याद है। 50 लगेंगे, बहुत सही है यार, इसको कर सकते हैं। लेकिन 50 मुझे मिलेंगे कैसे? भाई आ सकते हो तुम लोग क्रिस्टल चंक्स देने के लिए? अगर आ सकते हो तो आ जाओ यार, क्रिस्टल चंक्स थोड़े हो जाएंगे मेरे पास, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे ठीक से पता भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ, जो जो आ सकता है आ जाओ यार क्रिस्टल चंक्स के लिए। मेरे पास 8 है, मुझे 42 और चाहिए। 42 मुझे पता है कहाँ मिलेंगे, स्टॉर्म टेरर वाली बिल्ड में मिलेंगे शायद, इतना मुझे पता है। ये यहाँ पे स्टॉर्म टेरर लेयर में मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे मिलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मिलते हैं, और यहाँ पे भी मिलते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा था, ब्लैक स्मिथ। तो बताओ यार क्या करें? आ सकते हो, आ जाओ ब्रो, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर चलते हैं, वहीं चलते हैं, मेन स्टोरी में अभी रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Ad Astra. I am sorry, but you have not yet completed enough commissions. मुझे बस क्रिस्टल चंक्स चाहिए 42, दिला सकते हो भाई? आ जाओ यार, जो लोग आ सकते हो। ओके तो मैं कुत्ता खिलाता हूँ। ओके मैं आता हूँ, ठीक है ब्रो। वो भौंकने लगा। अरे ठीक है भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे गायब हो गया, कुत्ते ही गायब हो जाते हैं यार। ब्राउज आइटम, इसमें देखे इसके पास है क्या कोई चीज़ अच्छी खासी? नॉट शॉट नहीं, मेन क्वेस्ट, चेट मेमोरी ऑफ रिवॉल्विंग। आज मैं मिशन भी नहीं देखा हूँ कुछ। हाँ चलो मिशन देखते हैं। अभी ये डाउनलोड ये दोनों बंद है, क्योंकि मुझे ये पहले करना पड़ेगा स्नैपशॉट, क्योंकि वो बुढ़िया जो है वो दादी अम्मा, वो उसमें अटकी हुई है, इसी वाले क्वेस्ट में अटकी हुई है, तो मैं तभी कर पाऊँगा। बाकी मैं ये सब कर सकता हूँ, पर मैं पहले अब भाई उसको मेन करना है अब, मतलब रखेंगे 4 मेन में रखेंगे।
अपना मेन कैरेक्टर नहीं हटाने वाला मैं लेकिन जियो की जगह रख सकते हैं उसको आराम से, ईटो को। और एक बार ईटो मस्त हो गया तो यार गजब ही हो जाएगा। 40 तक ले जाना है, 40 तक ले जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नोटिस देख लेते हैं। गेम अपडेट भी आ रहा है, मैंने अपडेट पूरा कर लिया है गेम। और कुछ ये यूजिन आने वाली है भाई साहब, यूजिन। ये भी काफ़ी सही करेक्टर है यार, इसका मैंने वो देखा था, प्रोमो देखा था, काफ़ी सही करेक्टर है ये भी। आजा ब्रो आजा, कोई दिक्कत नहीं। शोना के साथ तो हैप्पी न्यू ईयर मनाना ही था, इसलिए मैं आ गया। बेचारी कब से वेट कर रही थी मेरा। यार बात तो है इसमें, है ना, कुछ बात तो है इसमें। ओके, मैक्सवेल आ चुका है। आजा ब्रो, मैक्सवेल आ चुका है। कुछ बात तो है इसमें। ओके, मैक्सवेल आ चुका है, बगल में खड़ा है। हेलो ब्रो। चलो भाई, ले चलो, लेट्स गो लेट्स गो। ओह शिट, हाँ करेक्ट है। चलो भाई, अबे चला गया वो। ओके, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ओ यहाँ पे गया, यहाँ पे मिलता है क्या? ये जाइलिंग मेन रखा है इसमें। ओह क्रिस्टल जंक्शन, नाइस। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, मुझे जियो करेक्टर लेने दो। मैं जियो करेक्टर लिया ही नहीं है। जियो 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 जियो, ये रही। हाँ कहाँ गया कहाँ गया? एक और, हाँ 2 मिल गया, चलो। यहाँ मिलते हैं, मुझे पता नहीं था यहाँ मिलते हैं। अरे यार मस्ती मस्ती में ये ऑन हो गए। ओह A reward on the road. चलो भाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ले लिया और नहीं है यहाँ पे। कुछ लिख रहा है क्या ये? उनको बोल देता हूँ, यो फॉलो मी। नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा वेट कर रहा है क्या? नेक्स्ट वेट कर रहा है क्या? अच्छा चला गया। अब कहाँ गया है? ओके यहाँ गया है। फटुई फटुई। क्या भाई, क्या मार रहा है वो? अरे अरे इसको क्या हुआ?
Congrats, I'm also coming. आ जाओ ब्रो, आ जाओ. I must leave no stone unturned. इसी बहाने ये भी ले लेते हैं. कहाँ गया? All in a day's work. ओके, नैन भी आ गया है. नैन को भी ले लेते हैं. भाई जितने ज़्यादा लोग उतना मज़ा आएगा मुझे. आज यही करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं. आ जाओ साथ में सब. कहाँ गए सब? नैन कहाँ गया? अरे सॉरी. ओह भाई हेल्प तो हो रही है अच्छी खासी. कुछ इस कोने में भी था ना. वैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडर में ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ चलना चाहिए था, पर वहाँ जा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों. शायद कोई बात होगी. मतलब हो सकता है छोटी छोटी जगह पहले खिला रहा हो, उसके बाद बड़ी बड़ी जगह पे. ओके, नया आ चुका है. Someone needs assistance. ओह ठीक है. Oh dear. Everyone's laundry is still on the line. May I be excused to fetch it in? Ooh, wonderful. वंडरफुल भाई वंडरफुल. ओके वो कूद रहा है. रुक जाओ देख लेते हैं उसके पास क्या है. सब बुला रहा है. ओह क्या तोड़ना था क्या इसको? ओके नंबर 3 यहीं खड़ा हुआ है. क्या हुआ भाई नयन? Such fair weather. Why don't we do a bit of sunny work? भाई कहाँ चला गया? कहाँ कहाँ कूद जा रहा है भाई? कहाँ गया? ऊपर ना हो यार, मैं नीचे आ गया हूँ. ऊपर है. शेट मैन, वो चढ़ना पड़ेगा अब. चलो पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है. ओह इसमें मिलेगा. नहीं इसमें तो नहीं है. ओके रुक जाओ, नया आ रहा है भाई. रुक जाओ, उसका भी वेट कर लेते हैं. कहाँ गया? नया. ओह ये रहा. आजा भाई आजा, ऊपर आजा. ओह उसके पास भी अच्छा खासा कैरेक्टर है. आजा भाई.
वो ये मुझे क्या दे दिया? चलो जो भी दिया सही दिया। आओ। उधर वो मारपीट कर रहा है भाई, हम यहाँ लोग खेल रहे हैं। ओह Ooh, wonderful. ओके, वो उधर बुला रहा है। चल यही करेंगे आज। नैन का शायद वो नहीं चला, नेट नहीं चल रहा, मुझे देख रहा हूँ थोड़ा स्लो है। यहाँ पे देख रहा है वो। अरे वो कहाँ गया? I must leave no stone unturned. As a dutiful maid would. पता है स्टोन ऐसे से कुछ होगा नहीं, लेकिन तब भी मैं मार रहा हूँ। जानता ये लोग मारेंगे ही मारेंगे। All in a day's work. चलो भैया, क्रिस्टल चंक्स और मिल गए। वो कितने मिल गए भाई? हो चुके होंगे, कुछ ज़्यादा ही हो चुके होंगे। नैन यहाँ फाइट कर रहा है। A little dusty. Best give it a spring cleaning. लड़ो भाइयों, मेरे लिए लड़ो। ओके, अब कहाँ चले? ओके, ये जगह ढूंढ रहा है। ओ, नैन कहाँ गया? ओ नहीं नहीं है। ओ ये Someone needs assistance. दिस डॉल। वो नैन का कैरेक्टर। अरे ये कौन से कैरेक्टर है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत सही है भाई। ये कुछ तैर रहा है इसके ऊपर। ओके लेट्स गो। कहाँ गया भाई? नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2, ये रहा। लेट्स गो। वो यहाँ पे डिफीट ऑल एनिमी आ गया। ये मेरे लिए खुद मुझे लोकेशन बता दो बस। ले लिया ले लिया ले लिया। मैं भाई कंफ्यूज है। वो इसके बाद टेलीपोर्टेशन है भाई। I'll catch up. टेलीपोर्ट हो रही है भाई, अच्छा खासा। वो अब स्टॉर्म ट्रे चले, वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी भाई, वहाँ ज़्यादा मिलेगा, वहाँ मज़ा आएगा। वहाँ 42 हो भी जाएगा शायद मेरे हिसाब से। ओके अब कहाँ गया? यहाँ गया। ओके भाई ज़्यादा जानता है यार, मेरे से ज़्यादा खेला है वो, तो उसको ज़्यादा पता है कि क्रिस्टल सेंस कहाँ मिलेंगे। हाँ इसके अंदर मुझे ही पता है, इसके अंदर मिलता है। डॉक्टर लूकस मिल गया भाई।
और वेट कर रहा है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? I missed a spot. पहले यहाँ से निकलो। मैंने इसको ट्रिगर कर दिया था गलती से। भाई नयन पीछे हो जा रहा है। नयन भाई पीछे हो जा रहे हैं। Someone needs assistance. ओए सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया आ गया आ गया आ गया। तो दो यहाँ भी थे। अरे यहाँ पे वो भी है। कहाँ है लेकिन दिख नहीं रहा मेरे को। वो दौड़ा लिया उसको। I'll catch up. वो मेरे आने से पहले ही मार देता है भाई। A little dusty. Best give it a spring cleaning. इस कोने में कुछ है, क्रिस्टल चंक से शायद। हाँ क्रिस्टल चंक से। हो गया हो गया। All in a day's work. भाई नयन तुम भी ढूंढो यार क्रिस्टल चंक्स, कुछ मिलेंगे तो बताओ। नयन 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 भाई कंफ्यूज है कहाँ जाए। कहाँ गया? नंबर 2। ओके यहाँ गया है। शायद नयन भाई को पता नहीं है, शायद साथ साथ चल रहे इसीलिए। ओके ये बहुत नीचे गया है भाई वो। ओ भाई ये क्या है? अच्छा वो उसकी तो राम राम सत्य हो गई। ओ यहाँ भी अच्छा खासा मिल रहा है भाई। Steady as. Wingblade, prepare to be blown away. उड़ जा। Time to clean up. अबे इसको मारो यार, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। नाइस। कि मैंने वो करेक्टर नहीं लिया ना। रुक जा, शोना को पहले अंदर रख रहा हूँ। कुछ अच्छा करेक्टर ले लेते हैं पहले। शोना की जगह ये लेते हैं रोजारिया। ये सही रहेगी ना अभी क्योंकि वो भाई यहाँ पे दुकान लगा के रखा है। Fine, I will also go to the place I know. Be sure to come. Okay, okay. All in a day's work. Okay, नयन कहाँ गया? नयन को देखते हैं, नयन जहाँ जानता है। अब उसकी जगह पे जाते हैं एक बार। बाकी बाकी लौंडा देख रहा है। ओके नयन बताओ भाई।
कहाँ है? I'll catch up. बता भाई। ओके, इसका थोड़ा सा इसका नेट वो है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ओह, चलो अच्छी जगह जानता है। मैं ये वाला लूट के उधर चलता हूँ। Someone needs assistance. ओके, इसी बहाने उसको ही मार दिया। A little dusty. Best give it a spring cleaning. ओह नैन, चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, Oh dear. Everyone's laundry is still on the line. May I be excused to fetch it in? ओ यहाँ क्या था? I'll catch up. Someone needs assistance. You can't run. ओह, ये तो मैं जानता ही नहीं था। इसका इसीलिए प्रो प्लेयर्स के साथ खेलना चाहिए, बहुत हेल्प हो जाती है। Leave it all to me. ओके, अब देखते हैं नयन किधर है। नयन को एक बार देख लेते हैं। ये अभी भी वहीं खड़ा है वो। ओके भाई, ऑफलाइन हो गया शायद, तो नेट सही करने गया। I'll catch up. ये कोई टारगेट कर रहा है। ओके, नयन यहाँ पे ले गया। नयन आगे उड़ रहा है। ओके, नाइस प्लेस। एक सेकंड, कोई आ रहा है, योना करके कोई आ रहा है। ये वो गाय कौन थी?
ओके स्टॉर्म ट्रेजर शायद ना। ओ अलग ही प्लेस। देख रहे हो कितनी हेल्प हो रही है। Steady as stone. Yeah, judgment. Shiver. You can't run. Yeah. Hit judgment. अच्छा गाय इसकी थी ओ अच्छा इसके पास गाय है। भाई सही है। ओके उस साइड कह रहा है, उस साइड चलते हैं। कि इन लोगों का स्टैमिना ज़्यादा है, मेरा स्टैमिना कम है। There are a few interesting trinkets here. ओ और उधर हेलो, मैं भी थोड़ा हाथ साफ कर लूँ। Lights out. Yeah. Judgment. I must leave no stone unturned, as a good knight should. भाई यार मार लेने दिए होते। चलो कोई बात नहीं, हेल्प कर दिया, भाग गया। और ये हेल्प करके तुरंत भाग गया उधर। I suppose it wasn't too much trouble. ओकी डोकी। Punishment. Yeah. Yeah. Leave it all to me, as a dutiful maid would. कहाँ भाग गया? अबे उसके पीछे क्यों पड़ा है? You can't run. उसके पीछे पड़ गया था। वो भाई लोग दो चेस्ट खुलवा दिए मेरा। There are a few interesting trinkets here. हाँ जल जाएगी। ओके भाई चंक्स किधर है? क्रिस्टल चंक्स। चंक्स अबे तू चुप। Judgment. Yeah, punishment. Yeah. Yeah. Time to clean up. Someone needs assistance. छुपा हुआ क्यों था? ओके ये लोग कहीं और उड़ के जा रहे हैं।
work. Someone needs assistance. और किसी को आना आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। ओ, इसको ऑन करूं? मतलब मैं नहीं समझा, ये ऑन क्यों करवा रहा है? करना है क्या? ओ, मुझे प्रीमो जेम्स मिलते हैं। ओ यार, सही तो है तब। ये मेरे को नहीं पता था। आ गया, आ गया। मेरा नेट नहीं चल रहा क्या? मेरे टेलीपोर्ट हो रहे हैं। ओ, ये यहाँ पे? Let's roll. वहां जाना है? अरे तुम दोनों चले जाओगे, मैं कैसे आऊंगा? हाँ, कोशिश करें। ओके, मतलब ज़्यादा स्टैमिना नहीं खाता, जो कि सही सही चीज़ है। मुझे लगा ज़्यादा स्टैमिना खाएगा तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा वहाँ पे। और कहाँ है? कुरानो ना। रेड उसको पानी में घुस घुस मार रहा है भाई। Steady as stone. Can't catch me. पानी में घुस घुस मार रहा था। ये वहां पे, ओ यार वहां पे तो वो है। ये ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है एक गोल्डन, मैं इसको ले सकता हूँ। चले गया, लेकिन बहुत दूर नहीं है। इनको मैं लेके आता हूँ। तुम लोग रहो यहीं पे, मैं लेके आता हूँ। पता नहीं पहुँच पाऊंगा कि नहीं, दूर है क्योंकि। वो भी चला गया, मैं ही रह गया। मैं लेके आ रहा हूँ इसको। पहुँच जाना। रुक जाओ, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। ओह, मर जाएगी, 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 मर गई। शिट। अरे यार, यहाँ तक जाना था यार। ओके, इसको लेंगे बाद में। कहाँ गए ये लोग? मेरे पास एक गोल्डन की था यार, मैं ले सकता था उसको। चलो कोई ना। Oh dear. Everyone's laundry is still on the line. May I be excused to fetch it in? ओ भाई, यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ क्या? वो तो भाई सिर्फ सर्च करता है तो उतने में हेल्थ ले लेता है। Ooh, wonderful.
ओए नीचे नहीं गिरना क्या? ओह नमोरा, गमोरा की बड़ी बहन नमोरा। अरे ओह वो कह रहा ट्रेड करो, ठीक है चलो आप, चलो ट्रेड करते हैं, देखते कितना हुआ। मुझे लगता हो गया शायद। Such fair weather. Why don't we do a bit of sunny work? Oh, what sort of work is that, you ask? Well, anything that makes you feel bright and sunny too. हेलो सर, सर मैं आया हूँ यहाँ पे क्रिस्टल चंक्स देखने कितना हुआ है। ओ हो गया, 80। 80 कैसे हो गया, मुझे पता भी चला 80 हो गया। भाई तुम लोग बहुत काम किया हुआ है। वाइट ब्लाइंड ना, वाइट ब्लाइंड बोला था ना, हाँ ओके लेट्स गो। फॉर्ज हो गया, हो रहा है। सब ऑब्टेन, चलो वेपन मिल गया। टेकिंग, ओह नाइस। अब इस वेपन को हम लोग करेंगे, देंगे उसको। ओके लेट्स गो। हम, तुम जाओ अंदर, तुम आओ बाहर। लेवल अप करेंगे। तुम्हारे लिए ही वेपन था भाई, आ गया तुम्हारे पास। एनहांस नहीं, पहले स्विच करो, स्विच। लेट्स गो। भाई मेरा पैर दुखने लगा बैठे बैठे। Don't we have a job to do? भाई लोग कहाँ गए? भाई लोग, अबे तुम दुकान में दुकान चला रहे हो भाई, मैक्स वाला दुकान चला रहे हैं। नैन भाई आ गए, ये देखो मिल गया ब्रो। मिल गया मिल गया। इसको अपग्रेड करूँ, इस करेक्टर को? चलो अपग्रेड ही करते हैं। मिल गया भाई, थैंक यू ब्रो। लोग रुक जाओ एक सेकेंड, मैं तब तक इसको अपग्रेड करता हूँ। इसको अपग्रेड करते हैं 40 तक, ठीक है? क्योंकि मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं और काफ़ी वो है। तो सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं। ये पेपर है शायद ना, मटेरियल, और ये बुक्स हैं। हीरो विथ, चलो सबसे पहले 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 55 तो ले लेगा ये, दे देते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्स, मैक्स इसमें हो रहा है। ठीक, मैक्स हो गया। अब इसको और मैक्स करने के लिए मुझे ये चाहिए, ये मिल जाएगा मुझे, बगल से ही मिल जाएगा। हाँ इससे ले लेते हैं। डू यू, अरे रुक जाओ एक सेकेंड ब्रो, मैं देखा नहीं। हाँ, डू यू नीड एनी अदर हेल्प? अपग्रेड करो वेपन। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ रुक जाओ, क्या लिखे थे ये लोग? फाइन, आई विल, आई ऑल्सो गो टू द प्लेस आई नो, बी श्योर टू कम। अपग्रेड करो वेपन। डू यू नीड एनी अदर हेल्प? रुक जाओ भाई, करता हूँ, पहले ये तो कर ले। अरे खोल ही नहीं रही है। वेलकम, एवरी ट्रेजर इज द यूनिक, वी डोंट शेयर द प्राइस, नॉर डू वी गिव रिफंड।
अरे तो कर तो यार, खोल तू। बड़ी गधी है। ओके ठीक है, वेपन पहले अपग्रेड करते हैं। वेपन ही अपग्रेड कर लेते हैं, क्या बोले। एनहांस करते हैं, ऐड करते हैं। ओके हो गया। अब ये मिलेगा मुझे Don't शबरियन शॉप underestimate the एंड beetle. लुई। They can be some of the ओके toughest लुई little जाना guys पड़ेगा around. मुझे। Yes, you can. Yes, you can. Wanna know ब्रो what's on this मुझे ये beetle's खोलना diet? है, खोल नहीं रहा है, तो इसलिए शायद मुझे पहले ऑफलाइन होना पड़ेगा। रुक जाओ भाई, मुझे ऑफलाइन होना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। आपस में फाइट कर रहे हैं दोनों। दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके क्या खोलना था मैं भूल गया फिर। हाँ मुझे ऑफलाइन जाना था। भाई रिटर्न टू सिंगल प्लेयर, 1 सेकंड में आता हूँ, 1 सेकंड में। There will definitely be something that catches your eye. नयन भाई 1 सेकंड में आता हूँ। ओके लेट्स गो। आप खोल रही है ना वही चीज़ ना। क्या लेना था, येलो वाला ना। हाँ ये रहा, एक चाहिए मुझे बस। थैंक यू। अब मैं इसको अपग्रेड और कर सकता हूँ, 40 तक ले जाएंगे इसको। कहाँ गया, जाइलिंग को रखो अभी अंदर, जाइलिंग वाइलिंग की जरूरत नहीं And है। the crowd goes wild. असिस्ट ओके Now that's what I. ओके। अब इसको 40 तक पहुंचा दें। भाई मोरा तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही मोरा है मेरे पास, और लग रहा है मुझे ख़त्म भी होने वाला है मेरा मोरा। 40 मैक्स इस पे हो रहा है। ठीक है लेट्स गो। और ये ले लेते हैं। और एक चीज़ और, वेपन भी अपग्रेड करना था हम लोग को, तो वहाँ चलते हैं अब लुई में, लुई हार्बर के शबरियन शॉप पे, जो भी नाम है उसका, वो यहीं कहीं मिलता है, मेरे को पता है। ओके वो शॉप किधर थी मैं भूल गया थोड़ा, इधर है ना। हाँ यहीं है। यहीं पे है, मुझे श्योर नहीं है लेकिन फिर भी हाँ यहीं पे। या ओके ओके वो अलग चीज़ कहाँ मिलेगी। ओह सोल्ड आउट हो गया है, व्हाट द हेल। वो यहाँ मिल सकता है यार, सोल्ड आउट हो गया है। अच्छा मैंने ही तो परचेज किया था, और नहीं दे सकती है ये, और नहीं भरता क्या। परचेज अप टू 1, उसके बाद नहीं मिलेगा क्या यार, ये तो बहुत गलत चीज़ है यार, बेचने के लिए रखना चाहिए था इसको। मेरा वेपन अपग्रेड नहीं होगा तब तक, अगर मैं ये नहीं खेलूँगा जब तक। ये था ना, क्या था भूल गया, ये था हाँ। ओके चलते हैं यहीं पे, क्या ही करें। ओए
गिरा मैं, मरा, बच गया। तो डोमेन करो मतलब यही ना? हाँ भाई वही डोमेन करे। डोमेन ही मिलेगा क्या? कौन सा डोमेन? ये वाला कहाँ गया? ओके शायद यही बोल रहा है। आओ चेक मारे। वो ये रहा। उफ, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। एक मुझे स्नो वाला चाहिए, नो पायरो। पायरो का कैरेक्टर चाहिए और एक स्नो का चाहिए, तब मिलेगा। क्योंकि नया ना आ रहा है। क्या ये कोऑप है क्या? कर सकते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोऑप में कर सकते तो आ जाओ। मुझे पायरो लेना पड़ेगा और एक स्नो वाला लेना पड़ेगा। हाँ मिल जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। कोऑप करना है। यू आर इन कोऑप मोड, इनवाइट अदर प्लेयर टू चैलेंज द डोमेन टुगेदर। ठीक है। अब मुझे एक पायरो कैरेक्टर चाहिए और एक क्या चाहिए था? अरे एक कौन सा चाहिए था? एक स्नो वाला चाहिए था ना? हाँ तो स्नो वाला के लिए मैं ये रख लेता हूँ। और पायरो के लिए ये रखूँ कि ये रखूँ? जाइलिंग सही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ ये रखे कि ज़्यादा खतरनाक है। यू विल बी डिजाइन द करेक्ट। नहीं सही है। स्टार्ट करें ब्रो? अरे अच्छा हाँ वो लिया होता। ठीक है ठीक है। मैं सोचा कुछ गड़बड़ हो गया। ओके आ रहे हो ना? ये वो है ना मेरे साथ? पक्का है ना मेरे साथ? I'll race you there. Judgment. बाहर आओ भाई। अब रुक जाओ भाई, कर लेते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ बस, आ रहा हूँ। ये तो अपने आप मर जा रहे हैं। Complete. ये था। अब देखिए मुझे मिलता है नहीं मिलता। Obtained. ओके नाइस। ओ 4 मिल गया। नाइस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। 1 नियन की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। सॉरी ब्रो। कहाँ गए? आ गया ब्रो। भाई हो गया, काम हो गया। ओके ओ ये भी है। ओके अच्छा ये डोमेन की बात कर रहा था भाई। मैं सोचा कि इस डोमेन की बात कर रहा था। ओके ये रिमेन कॉस्ट हैविंग अपॉर्चुनिटी दिस वीक। ओके मेरा कैरेक्टर हो सकता है अपडेट, तो मैं कर लेता हूँ अपडेट।
weapon enhance. ओके 40 हो गया। बेस अटैक 26। इसका ही बढ़ा दे क्या? वैसे कौन सा वेपन है इसके पास? 4 नंबर वाला है ना? एक सेकंड, हाँ 4 नंबर वाला है इसके पास भी, तो उसको बढ़ा सकते हैं। ये 20 पे, ये 40 पे, किस लेवल पे? 20 पे। किसके लिए लड्डू चाहिए? लड्डू कहाँ से मिलेगा? शेवरियन शॉप से लो ही में। लड्डू देखे क्या है इसके लिए? पर इसकी ज़रूरत ही क्या है भाई? अब हो गया ना। नैन भाई, चलो भाई मिलते हैं। 55 है। चलो नैन की भाई, थैंक यू सो मच मैक्सवेल और नैन दोनों को भाई, काफ़ी हेल्प हुई। बाकी तुम लोग यार ऐसे आते रहना, सही लगता है। आज अबे डरता नहीं हूँ अब मैं कुछ। Lights out. You can't run. Rain outlines your fate. Have to look a shade. Can't catch me. Let's roll. वही गैया फेंकता है। गैया कुछ तो मतलब होता होगा। ओके चलो फाइनली मिल गया जो कि हमें चाहिए था। थैंक्स टू बोथ ब्रोस। अरे यार क्या दिक्कत है तुम लोग को यार? Judgment. Read the newest message. Continue. 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 Leave. Hello. Look around the menu village. Menu पता नहीं किसके ऊपर चढ़ गया। ओके अब क्या Can't करें catch बताओ? me. अब क्या किया जाए? अरे यार
want some of this? ओह ले तेरी ले तेरी ले तेरी ले तेरी ले तेरी Punishment! ओह ओ भाई इसका ये वाली पावर क्या ही थी। ये नहीं टूटेगा, मुझे लगा टूटेगा। ओके इतनी म्यूजिक की बज रही, कौन है बचा है? ओ ये चाचा बचे हैं। उतर पहले वहां से उतर। Attaboy! ओह भाई ये देखो यार, ये क्या ही डेविल टाइप है। लेकिन यही चीज है ना, मुझे कैरेक्टर जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। Body and mind. ओह You can't run. कैया नकली से जेड है, ले लेते हैं, ये भी काम आता है बहुत ज्यादा, रखे रहता है थोड़ा बहुत। ओ भाई यहाँ पे देखो क्या ही फार्मिंग होगी। ओह ये नकली रखा है। ओके हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग कर सकते हैं कमीशन विशन कर सकते हैं, या तो हम लोग मेन स्टोरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है कुछ 1 घंटा में और खेल सकता हूँ। चलो कमीशन विशन कर लेते हैं, उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा बस उसको रिवॉर्ड को खाएंगे पिएंगे। व्हाट्स रॉन्ग? इसका मिशन इसको सुनना जरूरी थोड़ी ना है यार, कुछ अच्छा मिशन करो। कलेक्ट 5 वुडन प्लैंक्स, कहाँ से मिलेंगे? वहाँ से मिलेंगे, तो ले आते हैं वुडन प्लैंक्स। ओ यहाँ से मिलेंगे। ओके अरे चढ़ क्यों जा रहा है? Take a seat, please. एक मिल गया, 2 मिल गया, अरे ओके हो गया। ओह रिपेयर कर दिया, नाइस। और कुछ? चलो ये कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट कहाँ है? नेक्स्ट यहाँ पे। अभी मेरे पास कुछ है नहीं ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यही कर लेते हैं। कहाँ है भैया? Perfect match. Complete the challenge by defeating all opponent within time limit. यही है क्या? Okay. Let's roll! Yeah! Shiver! No, my sword! Judgment! Yeah! It's showtime!
Attaboy! क्या ही मुझे दिया, कंप्लीट हो गया। और कुछ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ओके, हो गया मतलब, सभी तो हो गया लगभग। शायद नहीं, एक बचा है। ये कहाँ मिलेगा? ये वहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ओके, यार मज़ा आ गया यार। अच्छा खासा आज क्या ही दिन है भाई, क्या ही दिन है गेंशिन इम्पैक्ट में मेरा। Let's roll! तुम लोग नीचे मत गिरना बस। ओ मैं नीचे, मुझे मत नीचे गिरना बस। ओके, अब उधर जाना है। पीछे तो नहीं है ना कोई? हाँ, गए दोनों। जे जे दबाया स्टोरी क्वेस्ट में क्लेम। ये क्या मिला मेरे को? व्हाट द हेल, ये क्या मिला मेरे को? हाँ, कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ समझ में तो आ गया, कुछ मिला है मेरे को। ये क्या है? एंडिंग रीच्ड। ओके, इन लोग की कहानी है। बार बार, ओ ये कौन सा कैरेक्टर है? चोंग यूंग, बैनेट तो जानता हूँ। ओ अनलॉक, ओ मैं अनलॉक कर सकता हूँ कैरेक्टर। कैट नहीं, क्रिटेरिया, क्रिटेरिया। ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्लिक टू व्यू, क्लिक टू व्यू द स्टोरी का स्क्रीन। डेली कंप्लीट, कंप्लीट 8 डेली मिशंस टू रिसीव द की। ओके, 8 डेली मिशंस। ओके, Best flavor in the world? The sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single mora on any of my snacks. I've won them all, fair and... बस कर। ओके, रिवॉर्ड लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मेन स्टोरी पे फिर से, स्नैपशॉट करने के बाद। क्योंकि अभी तो कुछ और नहीं समझ में आ रहा मेरे को, क्या करूँ इसमें, इसलिए। बाकी इसकी पावर मस्त लगी मेरे को, और क्या ही चाहिए। Ad Astra Abyss. Thank you for 28 पहुँच चुके हैं Ad हम लोग। Astra Abyss. 28 पहुँच चुके हैं हम लोग। उसको क्लेम कर लेते हैं इसी बहाने। Teapot. A teapot to call home. The crisis looming over Louisville Harbor has claimed that and its business as usual in the city. However, Madame Ping, the flower admirer from Eugene Terrace, seems to have something more to discuss with you. Complete the quest to unlock the. Complete a new star to accept this quest. New star approaches. Okay, कोई quest आया है शायद। न्यू स्टार नहीं आया अभी।
ओके एक सेकंड रुको. कंप्लीट अ न्यू स्टार अप्रोचेस टू एक्सेप्ट दिस क्वेस्ट. कोई आ रहा है. हेल्स. ओके कोई मुझे बता सकता है कि क्या है. कंप्लीट अ क्वेस्ट अ टीपॉट टू कॉल होम. ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को. कोई इवेंट आया अभी जस्ट आया. इवेंट ड्यूरेशन है परमानेंट. ओ मतलब कभी भी कर सकते हैं इसको. ठीक है कभी भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है. बाकी मेरे पास 30 और बचे हैं तो मैं कोई और वेपन बना सकता हूँ क्या. 30 और इससे 11 चाहिए भाई. सोच रहा था एक और वेपन बनाऊंगा लेकिन क्रिस्टल चंक्स नहीं है यार. क्या करें. बड़ी मजबूरी है. ओके स्नैपशॉट करते हैं. उसके बाद हम लोग कल देखेंगे इसको. स्नैपशॉट. एरोन क्वेस्ट कंप्लीट करो. मेन क्वेस्ट. ओके ओके ठीक है ब्रो करते हैं. मेन क्वेस्ट के लिए मुझे प्लस स्नैपशॉट कंप्लीट करना पड़ेगा उसके बाद ही खुलेगा. तो इसको कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं. ओके रुक जाओ एक सेकेंड. यहाँ पे शायद चार्ज करना था मेरे को. डिलीवर द पिक्चर्स टू द कस्टमर. कस्टमर भैया. मुझे देखना पड़ेगा किसको देना है. Zoo from Lille Harbor commerce two customer came to have their pictures taken but he forgot to write their names on the back of the picture and now has no way to deliver the picture to the customer so he has turned to you for help. According to him you should be able to find the customer location by studying the picture taken by the camera. Okay. Don't underestimate the beetle. They can be some. ओके कैमरा Toughest देखते little हैं. guys around. अरे यार क्या देखता रहता Yes, हूँ you मैं. can. Yes, you can. पिक्चर. यही है कैमरा पिक्चर्स. हाँ यही है. रीड. ओके दादी अम्मा की पिक्चर लिया था इसने और इसकी पिक्चर लिया था. Wanna ओके know what's on दादी this अम्मा beetle's किधर है diet? यहाँ पे. Sweat and tears, that's what. That's how it gets stronger. I ओ think इससे we can पूछ all सकते learn हैं. something from that. कैमरा. यस आई डिड गो टू फ्यू डेज टू आस्क हिम टू कम हियर टू टेक अ पिक्चर. ओके मिल गया इसको. नाइस. गौरव करेक्टर मिला है क्या कि नहीं. गौरव करेक्टर कौन सा गौरव करेक्टर. भाई देख लो मेरे पास इतने ही करेक्टर है अभी. रोजारिया जिंगविंग नेला केनिया लीजा बेनेट और फिर ये है बाबरा थोमा. उसके बाद ये आई है एक करेक्टर. इसको भी हम सोच रहे मैच करें भाई. ये बहुत सही लग रही है मेरे को. मतलब देखने में अच्छी लग रही है. बाकी तो कोई दिक्कत नहीं. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. ओके यहीं पे होना चाहिए इसको.
क्योंकि ये पिक्चर यहाँ पे है लेकिन वहाँ नहीं है। होना तो यहीं कहीं चाहिए इसको, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। डॉग वाला करेक्टर जो बैनर पर है। रुक जाओ भाई, मुझे अब एक सेकेंड। कौन सा बैनर? रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ। F2 ना, F2 नहीं, F3। ओ ये वाला? नहीं भाई, ये मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ये भी चाहिए था। रुक जाओ, कहाँ गया डिटेल्स? ओ गुरु, ये ना? नहीं भाई, ये नहीं है मेरे पास। ये मेरे को चाहिए था लेकिन है नहीं। जाइलिंग है मेरे पास, बारबरा भी है, ईटो भी आ गया। ये नहीं है मेरे पास गुरु। कोई बात नहीं, फिर किसी। लेकिन मैंने देखा है कि ये यूजिन वाला जो करेक्टर आएगा, जो आने वाला 2 दिन बाद, उसमें ये गुरु फिर से आ रहा है। ठीक है, तो उसमें ले लेंगे हम लोग, अगर ले सकते हैं तो। क्योंकि पिक्चर यही थी ना। उसमें आ रहा है, मैंने देखा है, मैंने ट्रेलर देखा है उसका। ओके, सीडी जो गोल वाली है उसके बगल से। ओके ठीक है। अरे नहीं यार, तुमसे बतियाना नहीं है मेरे को। Can't catch me. ओ ये रहा। चलो हो गया। गाड़ी में बस काम बढ़ाती है मेरा, और कुछ नहीं। ओ नहीं यार, नहीं। लोअर 24। अबे यार क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, इससे भी नीचे और नीचे। यहाँ पे है क्या? अरे Adventurers Guild. Tombs out of stock. We have some new items in. Feel free to take a 28। look around. अबे यार कहाँ है वो? रुक जाओ, कहाँ है? लोअर 21। एक सेकंड, यहाँ पे जाके, यहाँ से जाके, यहाँ से जाके, यहाँ पे होनी चाहिए। ओह ये रहा। क्या भाई तुम ना। चलो तुम गेम की मज़े लो, मैं चलता हूँ। बाय ब्रो, बाय ब्रो, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच भाई मैक्सवेल। और भाई अगर तुम भी जा रहे हो नैन, तो थैंक यू सो मच तुमको भी यार, इतनी हेल्प के लिए। फिर मिलेंगे कभी मतलब गेम में अच्छा खासा। बाकी देखने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्ट्रीम। अभी थोड़ी देर बाद मैं शायद चेस खेलूँगा रात में, मिडनाइट में, क्योंकि अभी शायद मैं सो चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो शायद मुझे रात में नींद नहीं आएगी, तो मैं खेल सकता हूँ। आई कुडेंट, दिस मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, ये भी हो गया काम। डिलीवर। ओके खुल गया, ये दोनों खुल गया। आर्कोन क्वेस्ट खेलते हैं अब।
ये कंप्लीट करते हैं मेन क्वेस्ट। वो ये भी गोल गोल घूमता है। नहीं दादी अम्मा। Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Okay, fashion, economy, jewelry and jade pottery. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. Devlin I Jones, have hi bro, made hi. kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. ओ भाई इसकी The आवाज 7 यार। kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Well, allow me. ओह देखो ना child ओह Hey, it's Child! sorry guys मैं कुछ खा रहा हूँ इसलिए ऐसी आवाज आई थी. Did you arrange to meet here? No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, चलो if you know what I nice. mean. थोड़े मोरा और आ गया मेरे पास. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Okay, find the 3 workers.
यही करना है ना? हाँ, आओ ढूंढे, पर शोना बन के ढूंढेंगे हम लोग। ठीक, इसका क्वेस्ट है। Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Eh? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. No, let's negotiate. Okay. A pleasure doing business with you. चलो, Save this money. उसका भी पैसा, उसका भी घाटा नहीं करेंगे हम लोग, और अपना भी फायदा। A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25,000 per day. What A fair the? trade, yes? कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं दे रहा। That's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. What the fuck? Well, you may never Hell, have heard of this sorry. hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay मेरे the बारे whole में सुना sum. नहीं? Night of Awareness हूँ मैं। Wait, let's talk prices. We will pay in full. Oh, मैं इसको bargain कर सकता हूँ। मूड थोड़ा कम करे। Current offer ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। Mora on hand बहुत कम है मेरे पास। 35 है मेरे पास, तो मैं इसको 15-20 दे सकता हूँ। पर वो अगर 15 मारा है तो 15 दे रहा हूँ मैं इसको। लेकिन कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है, कुछ साइन ला लगे। क्या ही बार्गेनिंग करूँगा मैं। 20 देते चलो, बाकी अपना लगा देंगे। 18,000 मान जाना चाहिए। 18 देते हैं इसको। $18 देते हैं। ओह, मूड देखो इसका। This is too little. I'd consider it if it was a bit higher. What the hell? चल ठीक है, 20 ले ले भाई। This price will do. No loss to me for a day's work. ओके, 20 मान के लौंडा। हे भगवान। ओके, लास्ट ही 15 मान जाए, मैं तो मैं ऐसे ही लगा दूंगा। Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So What? what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. 20 में मान जाना भाई, 20 में कह रहा हूँ, 15 में मान जाना। No problem. That'll be 20,000 more for a ओह single नहीं trade. How does यार। that sound? Done. What? नहीं, we bought too little. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now and get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. Guess we've got no choice. ओके, मेरे पास है वैसे। Have you brought the goods? हाँ। Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home. ओके, चलो मिल गया हम लोग को। डॉक्टर चाइल्ड। कुछ ज़्यादा ही पैसा मैंने खर्च कर दिया हम लोग पे, लेकिन पहले वाले पे मुझे ट्रेड कर लेना चाहिए थोड़ा सा। पर मुझे लगा यार चलो थोड़ा थोड़ा मांगेंगे, लेकिन लोग 20-20 हज़ार मांग रहे हैं यार। इतना भी क्या
हम लोग All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should कुछ नहीं never बचा go मेरे पास, unrewarded. सब दे दिया मैंने. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You You give give me me the- the information I Okay. need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. Oh, What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? what does Koda Fatoi want? Are you forgetting what happened in Mondstadt? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. कोई बात नहीं. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the Boo Boo finest Pharmacy? pharmacy in all of... Is everything okay? हाँ हाँ सब सही Everything है. is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. कोई बात नहीं यार, हो जाता है. बूबू फार्मेसी जाना हम लोग को. नाम भी क्या है फार्मेसी का? बूबू. कोई और नाम नहीं मिला इन लोग को. बूबू फार्मेसी. थोड़ा सा दूर है ये. But I don't want to. It tastes gross. You won't get better if you don't take your medicine. ये मम्मी है उसकी. Huh. The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. What? Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. अरे छोटी बच्ची होगी यार. छोटी होगी वो ज़्यादा. ये देखो बहुत छोटी है वो. वो काफी छोटी है यार ये तो. लेकिन बहुत क्यूट है. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Paman, if we are going to talk about heights, you are. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. What? Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. What? Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. What? Zombie? Chichi. Chichi नाम है इसका. Okay. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. Okay. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. Zombie My भी ये dear बताओ इस Chi-Chi, गेम में.
We didn't चीची bring a नाम है इसका, prescription, I'm पर afraid. क्यों लिखा है? But we do hope that क्यूआई you can still क्यूआई help फिर us find some everlasting चीची पता incense. नहीं कैसे. चलो Okay ठीक है. then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help You help चीची. Chi-Chi. Only fair. Okay. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That खाने way के लिए मांगेंगे everybody शायद. wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Coco goat. And ballista कुछ है. And what? With which at where? Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. Okay. An early mechanical device. Located in Qinheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Okay. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the Coco Coco goat. Goat. Coco The goat. cocoa goat is a legendary animal, Oh. an adeptabeast. Did you want to add anything else? No, just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, ये लेकिन बहुत cute है यार. also Cute don't zombie है ये. know. बहुत cute zombie. Don't tell us if you remember anything else you don't remember. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? शायद नारियल वाला गोट यही कह सकते हैं. कोई नारियल वाला गोट हो. लेकिन ये है बहुत छोटी. ठीक है. Look for ballista. चलो ballista चलते हैं. यहाँ मिलेगा. बस किसी को हराना ना पड़े बस. Okay. यार अच्छी जगह आ रहे हैं हम लोग. देख के तो लग रहा है. ओके चेक. It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Fix करेंगे और Mr. क्या. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista Okay, when it it was was first damaged in built, battle. in case it was damaged in battle. As I Okay. recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. Okay. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Okay, तो अंदर से पार्ट्स आने हैं. चलो. Where is that supply post? Here, post. और अंदर जाएंगे कैसे? Attaboy!
ये तो टूट ही नहीं रहा यार. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it Oh. even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? But here, So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a आपको turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Huh. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! The next thing you'll be repairing is your faces! And that's if you get out of this alive! अरे Tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. ओके बुढ़ा है. मुझे लगा था ये बहुत यंग लग रहा था, लेकिन जो भी को Who wants some of this? Should replace my Judgment! Lights out. Let me weave you a verse. You can't run. Judgment! Yeah. मरने की हालत में हूँ मैं. another test. Attaboy! Go! Hey! I wasn't ready! A little taste. Things are getting... Be gone! उड़ो बे तुम लोग. It's showtime! Picked the wrong test subject. Picked the wrong test subject. Attaboy!
catch me. Oni coming through. Can't catch me. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca Goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. पर कोको बिस्ट कुछ तो होगा यार, इन लोग ढूंढने की कोशिश भी नहीं किए। ऊपर कुछ है क्या? ओके, चलो चलते हैं चीची के पास, देखते हैं कुछ बताएगी। Can't catch me. वो ये बाहर आ गई। Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Coco goat milk is tasty. Oh. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Coconut milk. हे भगवान। I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken हे further भगवान, due वो diligence. कोकोनट पेड़ को बोल रही थी, Never mind, कोकोनट Zhongli. बीस्ट, You कोको didn't know. बीस्ट। As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. It all brings with the fruit of the coconut tree. It times to tell you where coconut milk come from. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. The same, she just need time to work through it. They all need to grow up something. What? Someone learnt a valuable life lesson today then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Oh, yes. Might I ask who? Ah, how rude of me. Baiju. I'm Baiju, boss of the Okay. Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck.
What a sorry state of affairs. White This little snake है. mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The medicine... The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Oh boy. Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last! Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. What? Guaranteed. You might as well just rob the Golden House. Oh, but the chasing of taking it over 3 for million now. मोरा भाई. Security will be tighter than usual. कुछ ज़्यादा ही 3 महंगा है भाई. million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to Child? 20 minutes later. Child आ गया. Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. मैं अभी That आ was गया the था फिर best मुझे laugh लगा I've कोई had in a कुकुर long करके time. कोई इंसान या फिर In वो होगा. return, I'm more than happy to कोई sort out जानवर this होगा. mess you've managed to get yourselves into. पर वही लगा Excuse me, कोको sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly कोको से honored. नारियल तो I'm पता चल Child, गया था कि one of नारियल the का पेड़ Fatui होगा. Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora. That's like 0 difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself. Though 2 million, practically no. speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, भाई सिर्फ little Miss 10,000 का Chi-Chi, कोकोनट लेगा see you यार. soon. ये कौन सा मतलब होता है यार? वैसे कोकोनट मिल्क इतना भी महंगा नहीं आता है. तो फिर भी यार 2 मिलियन. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House? If not the Exuvia. I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo saying goes, the walls have ears. ओके. तो मुझे क्या करना है? ओके, इंसेंस मिल गया है मुझे. ओके, इंसेंस मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर. वो दे देगा उसको जो देना है. बाकी हम चले. ओके, ऊपर जाना है. सॉरी. बहुत से दीवारों को भी कान होते हैं. ये भी बोल दिया. ओके, लास्ट चीज मैंने रख दी यहाँ पे. अब और क्या रखना है? Well,
As it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. ओ भाई अभी भी बच्चा है. Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this. Tonight, I shall take you both to an old hole-in-the-wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Okay. खाना खाए चलना है. Silent treat. Okay, wait appointment time. चलो टाइम बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी तो टाइम है मेरे पास. ओके टाइम बढ़ाते हैं. पहले ये ले लेते हैं जो है. और टाइम बढ़ाते हैं. टाइम है 18 ना. कैसे वेट कर रहा है? Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. वही कैरेक्टर आ रही जो अभी भी मैंने लिया. वही कैरेक्टर आ रही है. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? Lady Ninja. This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. पता नहीं वो आ रही है कि नहीं आ रही. The glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. यही है कि कोई और है. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Finally. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Okay, finally कहानी खत्म. Okay.
These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianchuan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? आगे क्या? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Chising. Ganyu. My name is Ganyu, secretary at the Yua High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Oh. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianchuan. She invites you to her palace in the sky. Oh. An official invitation? Oh, वो पहले जो स्काई में था, Ningguang वो said उसका this. है. Invite वो her to हम come लोग जान here. रहे थे, वहाँ पे I wish जाना to ही meet पड़ेगा. her. At the Jade Chamber, together तो we shall यार, snip every मजा ही one आ of गया these भाई. entwining आज dark हमको 3 threads. कैरेक्टर मिले और दोनों एक कैरेक्टर को मैंने मैच कर लिया. लेडी जिंगवा भी मिल गई मेरे को और जिंगवा बुला भी रही है हम लोग को. वाह. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. वाह भाई, But we've क्या हो received रहा है an आज? invitation आज from का the एपिसोड Liyue कुछ ज़्यादा ही Chising. ओपी हो गया. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. ओ भाई, मतलब वो हवा में उड़ने वाला जो था उसका पैलेस है. वही मैं सोचा था वहाँ पे कैसे जाएंगे और वो अब You'd ले जा best रही be है वहाँ on पे. your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. ओके ओके. We won't forget. यहाँ जाएंगे हम लोग. यहाँ जाके ही करेंगे. ओके. A new star approaches. ओ यही करना था हम लोग को और वही आ भी गया. ओके. अब मज़ा आएगा यार. अब मज़ा आने वाला है. फ्लोटिंग पैलेस यहीं पे जाएंगे हम लोग. ओके चलते हैं. माउंट जाना है यहाँ पे. वो जो हवा में पैलेस उड़ रहा था ना, जो मैंने बोला था कि एक बार चलेंगे, ये देखो ये वाला. ओह भाई, इस पैलेस जाने वाले. मज़ा ही आ जाएगा यार. अलग ही मज़ा है यहाँ पे जाने का. मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन पहले ऊपर जाना है इधर. उसके बाद ही ऊपर जा सकते हैं. रुक जा बे, छेड़ मत. Look up there. ओह पहुंच That's गए. the Jade Chamber. ओह यही जाना था यार. क्या ही मजा आने वाला है. दैट्स प्रीटी हाई अप. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to
be a way up there nearby. हाँ वही चीज़ ना, ऊपर जाने का कोई तो रास्ता होगा, मुझे भी जानना है। और अरे वो है देखो, अच्छा हाँ यहाँ पे जा सकते हैं हम लोग। ओह ये रहा, ओह नाइस। Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the jade chip. Yes, this must. ओके लेट्स गो, फाइनली हम लोग जाने वाले हैं। गजब ही हो जाएगा भाई। ओ बस 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 बस, ज़्यादा ऊपर नहीं। व्हाट द हेल? It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? The way shouldn't be secret or Or... Oh, Paimon gets it! if it is a If it secret. was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can. Oh, hang on a moment. Look down here. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. ओह अच्छा, उड़ सकते हैं उससे? Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? No thanks, I don't have that wish. Do you really hate me that much? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measure. वहाँ पे हम लोग को Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Okay. Finally. I'll keep this close. Head to work. किधर गया? बलिस्टा किधर गया? बलिस्टा किधर गया? ओके इस तरफ है। ओके रुक जाओ, पहले मुझे इधर जाने दो। पता नहीं इसको कैसे बलिस्टा दिख रहा था, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। पहुंच तो गए। Halt! अरे यार ये लोग Who फिर से आ गए। trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. वाह सही है, हमारे Let's roll!
Tactical! To ours! Take the target alive! So you know your stuff, huh? Lights out. Judgment! With the triads! Let's roll! Oh, coming through! Who goes there? Attaboy! Know my sword! Witness the power of Gugwa! Shiver! You can't run! Take the target alive! Prepare to be blown away! Take this! Looks like overtime today. Judgment! Let's roll! Lithic Triad! Punishment! Attaboy! Bested. Stop! What's all this about? Lady Kuching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Oh, ये कौन है? Queen Quingy? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have अरे हम ही thought. लोग ने जोड़ा ये नहीं बताओगी क्या डिक्के हाय ब्रो Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd Kuchen say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. oh Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance.
To think that they would call for a council of adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But... Wait! That's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture! Alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion. Okay. Well then. May we meet again, Traveler. Okay. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? You really have to shift your focus, haven't you? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slump. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope. But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Boom shakalaka है इसको तो बस यही पसंद है. Boom shakalaka है इसको कुछ चाहिए बस boom shakalaka. कुछ boom shakalaka मिल जाता है तो ये खुश हो जाती है. Boom shakalaka. देख लेते हैं क्या क्या लेना है. Okay. Boom shakalaka. Ooh, look at that slime! It looks crystal clear! And very delicious. That's the one! Showtime! कहाँ गया? Let's roll! Can't catch me! Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Okay. बचाना है उसको. There's no there! You're open. Be gone! You're open. So you know stuff, huh? You can't run! Lights out. Windblade! Judgment! Let me weave you a verse. Huh? Let's roll! Who wants some of this?
यहाँ पानी कैसे भर गया? इसके नीचे वो है। ओके, कहाँ गया वो? Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that. Great! Paimon Sugar Frosted Slime now comes in a beautiful package. Okay, many names. Hello bro. Hi. Hello. सब हाय हाय बोलो लेकिन बात नहीं कर रहे हो यार. करो यार, बात क्यों करो? क्योंकि एक सेकंड रुको, मुझे उसको ओपन करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा पार्टी चेंज कर रहा हूँ और वो ले रहा हूँ पायरो कैरेक्टर एम्बर. वही चीज़ ना, मैं जान रहा था पानी हटेगा, नहीं हट रहा, फिर हटेगा ऐसा पानी कैसे तो हटेगा. वो ये भी है. एक और होना चाहिए. एक और होना चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा मेरे को, कहाँ हो सकता है. That's more like it. I'll race you there. अरे व्हाट द हेल, सच में नहीं दिख रहा यार. रुक जाओ, 1 2 3, चौथा यहीं कहीं होना चाहिए. Told you I'd win. Attaboy! Can't catch me. तो हली मर नहीं रहा. नहीं दिख रहा यार, कहाँ गया वो? Let's roll. Get him! No one escapes my sights. Prepare yourself. Yeah! Attaboy! Rain outlines your fate. Windblade.
I'll keep this close. ओ ये रहा। ओके, मैं यही ढूंढ रहा था। ओके भी है। I'm on a roll. Woohoo! वो कहाँ गया? ओके, फाइनली पानी हटा। मैं वही चीज करने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो पहले उससे पहले उस साइड का ले लूँ मैं। Another target tracked down by Outrider Amber. अरे इसी साइड था, किधर गया? अच्छा वो रहा। कहाँ देखता हूँ मैं यार? I won't let you down. नहीं, मुझे लड़ना नहीं है, प्लीज। मुझे लड़ना नहीं है। What the hell? ओके, मुझे 3 ढूंढने पड़ेंगे इसी तरह के। अंदर मिलेगा मे बी। हाँ ये रहा, अंदर ही है। पर इसको निकाल सकता हूँ मैं शायद। इसके लिए चैलेंज करना पड़ेगा। Coming through. No escape. Go, go. It's just a scratch, I swear. Let's. Wingblade. Wingblade. Prepare to be blown away. I'll keep this close. कहाँ ऊपर भाग गया भाई?
I'm not losing. It's all part of the plan. Who wants some of this? अरे अटक गया। यही अटका था। ओके फाइनली कहाँ गया अब ये? ओके पहुँच गया यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। एक और चाहिए, पर उससे पहले मुझे एक ऊपर और मिल गया एक, इसको भी ले आते हैं। साला इन लोग के पास क्यों मिलता है? Can't catch me. अंदर ही मुझे दिखा था ना। अरे यार फिर खो गया वो। तो चढ़ ही नहीं पा रहा, इतना बड़ा है। अरे मुझे अभी यहीं तो दिखा था। क्या मजाक है, अभी तो दिखा था यार। ओके एक बचा है बस, एक उस तरफ होगा। अरे यार उसको हराना है, बड़े वाले को। रुक जाओ एक सेकेंड, मैं जल्दी से जाके पहले यहाँ पे थोड़ा हील कर लूँ। ओके आप चल सकते हैं। उठना नहीं। तुझे उठने के लिए कौन बोला है? Let it rain. Let's roll. No one escapes my sight. ओह शिट। Attaboy. अरे इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें।
मेन गेट से आएगा, आजा आजा। Rain outlines your fate. Oh, coming through! Let it rain. Bam! Let me weave you a verse. Swingblade! Prepare to be blown away! Attaboy! हार गए, फंसा के मारा। नाइस। All right, new toys for the boys. Hello, free money. Goodbye, working for a living. कि इसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। फाइनल निकल रहा है ऐसे। अब जाना है मुझे वेलहाबा। ओके told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Okay. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. Oh, How many would you like? थोड़ा देखा मुझे लगा नहीं देगा. Convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here?
Oh, I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. okay. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, Oh, higher than bhai. the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to बस उसको constantly moon extend बोलना it. था. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One Finally day, here आ गए. I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. What the hell? क्या बोली? At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Okay, एक second. हाँ. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Okay. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, Traveler?
It is him. Huh? What are you two talking about? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Okay. Jade chamber. यहाँ भी कुछ चीजें होंगी अच्छी अच्छी. What a Ooh. huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Okay, इतनी अमीर जगह पे हम लोग कूदे करेंगे नहीं, आराम से चलेंगे. लेकिन चोरी चारी तो करेंगे. चोरी करने के लिए कुछ मिला तो चोरी करेंगे. वो सॉरी, इसको देख रहा था मैं. देखते देखते मैं खो गया हूँ. वो यहाँ बुक पड़ी है, ले लेते हैं, काम आएगी. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. अरे यार, पाइमोन क्या क्या बुलवाएगी इस? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that.
One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Wow. Let's grab one, the biggest one. The biggest one. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. यही फंसवाती है मेरे को. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because अरे वो we चली can't गई. completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. कि जेड संबल से हम लोग बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं उड़ के. ये बहुत ऊपर है ना ये. लेकिन नीचे कुछ तो दिखा रहा है. इतना भी दूर नहीं है. बहुत ज़्यादा दूर है. अरे लड़ना पड़ेगा यार. ये तो वही जगह है जहाँ. We're Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. You'll get frostbite. Flash frost. Put your back into it. अरे लड़ना नहीं है यार मेरे को.
इस तरह का प्रोटेक्शन बना लिया है भाई वो। It's showtime! Windblade! No, my sword. क्या कर रहा है? Time to act. Rain outlines your fate. Windblade! अबे कहाँ चढ़े आ रहे हो तुम लोग? वहीं रहो। No one escapes my sight. Ring cutter. Attaboy! Rain outlines your fate. Oni coming through! Let's end this quickly. Windblade! Bam! I guess this is it. Okay. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper, too. Paimon's seen this Oh, Paimon knows. But how did Oh, that talisman. Maybe being able to channel divine power in battle? Whew. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Okay. थोड़ा लंबा क्वेस्ट होने वाला है। मेरे पास भी अभी थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मैं जाऊंगा खाना खाने। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, पर मैं जाने वाला हूँ जल्दी ही। देखते हैं कहाँ जाना है। यहाँ जाना है। ओके ओके मे बी ये चीज हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड। Right on time. ओके I myself चलो अच्छा only ये स्टार्ट हो arrived गया तो moments थोड़ा ago. सा कर ही लेते हैं। Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue.
Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. कुआई को Though ची they are both बोलते हैं लोग members of the Qixing. क्यूआई को Although ची she's कुई friendly, नहीं बोलते there's no way of ची clearly बोलते हैं discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current Genshin position. Wanderlust. No Hi ordinary bro. person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Makes sense. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. And now they are trying to reproduce. Okay. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingse Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No, those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. So you need me to sing. You need me to pick them. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? I can hold a tune. I'm a pro. Just step back and listen. Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. अब पता नहीं देखो कैसे गाती है ये. मैं तो अच्छा गाता हूँ पर ये इसका नहीं पता मुझे कि ये कैसा गाती है. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले गिले. फूल खिले हुए. पक्का ये गंदा गाती होगी मुझे लग रहा है. तभी उसके बाद कोई आएगा फिर गाएगा उसकी जगह पे, इसकी जगह पे, तो वो अच्छा हो जाएगा वो. ओके ये फ्लावर है. It's time to sing. Whenever you're ready.
ओके क्लियर थॉट Da 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 अच्छा तो गा रही है da da da. अच्छा तो गा रही है What happened? वो These flowers are jumping. They look अच्छा नहीं गाई है क्या Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Lille? तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है Attaboy! Can't catch me. It's showtime! Let's roll! एक एक करके मारना पड़ेगा Let's roll! Out! Meanie! Let it rain! Get him! Let's roll! ओके Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. ओके ये गाएगी Are अब you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. अरे नाम याद That है reminds हमको me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Huh. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, उसकी I सींग wouldn't है be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun,
are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never भाई had to bid कितना जीते हैं farewell भाई. to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. मैं सोचा पूछो You इसकी say एज that you are कितनी here है. looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Ganyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a... Yeah, Paimon can already... I've had enough ventures, and beginning a new undertaking is always difficult at first. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear... Wow. See? Alright, I think it's about time... ओके लिल हार्बर जाना है. तो अब ये चीज़ हम लोग करेंगे गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, जो कि होगी कल, या फिर अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ तब कर लेंगे. नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं. थोड़ी देर में वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि चेस खेलेंगे थोड़ा, अगर नींद नहीं आएगी तो. बाकी मिलते हैं. बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं. वो थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है. रीच रेपुटेशन लेवल 8 इन मॉन्स्टैड. ओके, ये भी कुछ है क्या? रेपुटेशन लेवल क्या है? देखो 29 होने वाले हैं हम लोग, एडवेंचर रैंक हम लोग की, तो सही है, मज़ा आएगा. ओके, देखते हैं क्या करना है. तो तब तक के लिए गाइस, तब तक के लिए चैप्स, अगर लास्ट टाइम पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो. और मैं मिलता हूँ आप लोग को गेंशिन इम्पैक्ट के नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, जो कि होगी बहुत जल्दी. और हैप्पी न्यू ईयर सबको. स्टार्टिंग स्ट्रीम की स्टार्टिंग ही मस्त हुई है, तो और एंडिंग भी गजब ही हो रही है. तो हमारा फाइनली ये कैरेक्टर ईटो आ चुका है. 1 सेकंड रुको, मैं जा रहा हूँ, पहले वहाँ ले लेते हैं. Best flavor in the world? यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं. तो ये चीज़ करेंगे हम लोग कल गैया के साथ. इसके साथ चैप्स, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय एंड सी यू टुमारो. और थोड़ी देर में मिलते हैं चैप्स के साथ. बाय बाय. My heart